Okay, direct wages, direct expenses, and factory overheads. Okay, this has 3. I'll repeat once again. Raw material input. This is the raw material. This is the output of the previous raw material. I mean the previous process. ये रहा 4,563,000. Okay. ठीक है. And other raw material which is given in the question. And direct wages, direct expenses, and factory overheads. Typical adjustment same. So by normal loss. Okay. Normal loss में you have weight loss or loss in weight. You can write how much is weight loss given. Let me check. Weight loss is nil बोला है. अरे there is no weight loss calculation. अच्छी बात है. So write here nil. यहाँ भी nil लिखो. Next, scrap loss. Okay, scrap loss कितना है? 5% और उसका सेलेबल वैल्यू है 4. ठीक है, चलो 5% पे निकालो. So 5% of total raw material input. ये दोनों को ऐड करो. 4,500 plus 1,500 कितना हुआ? 6,000. So it will be calculated on 6,000. Okay, very good, Swapnil. Okay, so 6,000. So 6,000 का 5% कितना होता है? 300. Okay, so 300, and these 300 units are sold for 4 rupees. Okay, ये जो 300 यूनिट्स है जो भी हमें मिला, इट इज सेलेबल. स्क्रैप वैल्यू इसका है कितना? 4 रुपये. सो मेरा स्क्रैप हो जाएगा 1,200. ओके, वाह, वेरी गुड. समृद्धा, श्रेया, स्वप्नी, वेरी गुड. ठीक है, डन. अभी क्या? नॉर्मल क्लोजिंग करो. Okay, do the closing. First close which column? First close the obviously quantity column. तो quantity column में 6,000, 6,000, 6,000 minus 300 is 5,700. ठीक है. By output carried down 5,700 and calculate the amount also. चलो टोटल करो. 63,000 plus 12,000 plus 12,250 plus 8,590 plus 4,255. So 1,095. So 1,095. 1,095. Okay, minus 1,200. 98,895. 98,895. ओके, इसका CPU भी निकालो. डिवाइड बाय 5,700.
17.35, ठीक है, इज माई CPU cost price 17.35. okay, yeah, Samridha, Swapnil, very good. ठीक है, अब ये इधर बन जाएगा या आउटपुट वाला बात, राइट. टू आउटपुट ब्रॉट डाउन, तो लिखो इधर टू आउटपुट ब्रॉट डाउन 5,700 and 98,895. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखो. आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 0 बोला है, नील. ओके, बट नीचे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, नीचे इन्फो है, नीचे बोला है आउटपुट सोल्ड 80% and transferred to finished stock is how much, 20%. तो 20% you have to transfer और बाकी का you have to sell बोला है. आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 0 बट सोल्ड बोला है 80% हैज टू बी सोल्ड. तो ठीक है, फर्स्ट आई विल सेल, पहले सेल कर दो इसको. सो राइट हियर बाय सेल्स, ओके, कितना 80% ना, तो 5,700 का 80% निकालो. 5,700 का 80%, 4560. ओके, 4560. ओके, फिर इसका सेलिंग प्राइस कितना है, ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया है 17 रुपीज. मल्टीप्लाई, तो 4560 मल्टीप्लाइड विथ 17 रुपीज, कितना हुआ 77,520. राइट ईयर 77,520. ठीक है, फिर आउटपुट कितने में ट्रांसफर किया आपने, बाय, हाँ, आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर, फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट. ये आपका लास्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये लास्ट प्रोसेस में आपका फिनिश गुड्स रेडी फॉर सेल है, तो सीधा लिखो बाय फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट, सिंपल एज दैट, और बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टॉक अकाउंट. ओके, कितना 5,700 का 20%, so 5,700 का 20% is how much, 1140. Transfer is always at which price, cost price. ठीक है, cost price कितना है 17.35, तो 1140 into 17.35 कितना हुआ 19,779. 19,779. ठीक है, मुझे ये बताओ ये सब में प्रॉफिट है या लॉस है. या स्वप्निल, वेरी गुड, यू हैव ऑलरेडी डन ऑल द कैलकुलेशंस. या इस सब में प्रॉफिट है या लॉस है, what is the cost price 17.35, at what price does you sell, you sold at 17 rupees, तो 35 पैसे का there is loss. या स्वप्निल, very good. Okay, so there is loss of 35 paisa. So we'll record that. Record karo. By CPL. Loss on sale. ठीक है, yeah. तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 4560 मल्टीप्लाइड विथ 35 पैसे का लॉस. ओके, so 4560 into 0.35, 1596.
Yeah, very good, Swapnil. 1596. ठीक है, ऑब्वियसली ये अकाउंट टैली होना चाहिए, टैली करके देखो. 5700, see the credit side also. 4560 plus 1140. Yes. Okay, check करो. 77520 plus 1596 plus 19779. Okay, 98,895. It tallies. Okay, clear everyone? Is it easy? Okay. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. ठीक है, लॉस आया है. हाँ, सो नाइस सम. प्रॉफिट भी मतलब दिख गया हमको कि प्रॉफिट भी हुआ है और लॉस भी हुआ है, सब एक ही सम में है. ठीक है, लास्ट व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर? CPL अकाउंट. सिंपल, कॉस्टिंग P&L अकाउंट. ना एवरी प्रोसेस में प्रॉफिट या लॉस तो हुआ ही है, एंट्री तो आएगा. बराबर. हाँ, सो चेक करो. प्रोसेस 1 में या है ना CPL का एंट्री है, प्रोसेस 2 में भी है. यस, दोनों में प्रॉफिट हुआ है. सो यू विल गिव द सेकेंड इफेक्ट राइट ऑन द ऑपोजिट साइड. सो गिव द सेकेंड इफेक्ट इन CPL अकाउंट by CPL. By CPL. Okay. By CPL. What you will write? By process account. By process account. Okay. Underline. तो प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 में प्रॉफिट हुआ है, उसका सेकेंड इफेक्ट दो. 9000 एंड फर्स्ट प्रोसेस में 6624. 6624. सेकेंड इफेक्ट प्रोसेस 3 में देयर इज अ लॉस राइट हियर. कितने का लॉस हुआ है? 1596. 1596. Okay, now close this ledger. So 6624 plus 9000. 15624. 15624. 15624 minus 1596. So 14028. 14028 is my answer. Okay, so this is known as net profit. Okay, let's go through this. Okay, Samidha, Swapnil already calculated. Very good.
Okay. Fine. Is it clear till here to everyone? Okay. So in this topic, you have these similar type of sums only, partly sold and partly transferred. Okay. Now listen. Now listen carefully. Since there are last 10-11 minutes left, so I'm going to do one small theory part with you. Okay. Because I cannot start with a new sum in this much time. So yeah. Now listen carefully what I'm dealing with right now. Okay. Type 3. Process stock account. Okay. This is what we are going to deal with next. So इसका theory part मैं करा के रख देती हूँ आपको. Okay. So what is this process stock account? Fine. Now, when you make a, in the question, they will give you opening stock and they will give you closing stock. Opening stock valuation will be given, but closing stock valuation will be a question mark. It will not be given. Okay? Yeah. Now, how will you decide how to calculate closing stock? Okay? It may happen that sometimes they may not give you even opening stock also. हो सकता है. In few sums there may be a case. Okay? Yeah. Now, what are we going to do is, when you make a process account, say it is process A account. Okay? We draw all these things. This is the quantity column. This is the amount column. Here also there is a quantity column. Here also there is a amount column. Okay? तो प्रोसेस ए के नीचे ही उसका स्टॉक अकाउंट बनाने का. ओके, दिस इज टाइप 3. सो सेम क्वांटिटी कॉलम, अमाउंट कॉलम, quantity column and amount column. Fine. So everything will be same. To raw material input, to direct wages, to direct expenses, to say factory overheads, ये सब कुछ दिया रहेगा. Okay, then normal loss will be there, which will have either a weight loss or a scrap loss. So all these calculations will be there. Okay. Now, where will the difference come? I'll tell you. Now pay attention. Huh? Okay. When you will close this ledger, yeah, you will get an output. Now, sometimes what will happen in the question? They will give you the output. Okay, they will give you the output. So if the output is given to you, then we all know. So either the balancing figure will be abnormal loss or it will be abnormal gain. And then we apply the formula and we calculate the amount. Yes or no? Everyone? Yes or no? Agreed? Correct, na? Yeah. Okay? And then we close this column. And we get this answer. Then we calculate CPU. This CPU and this CPU should be same. Correct? Then what you should do is, process stock account will be given. When process stock is given, process A, process B, process C. We make an individual stock account. Okay? This output will be transferred here.
okay, to process A, तो जो भी आंसर आएगा, okay, then we write opening stock your debit side, okay, then we write closing stock here, okay, इसका amount will not be given to you, but ठीक है, इसका amount नहीं दिया रहेगा, so what you have to do, closing stock to be valued at cost price, so cost price आपको कहाँ से मिलेगा, cost price of the process कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, this divided by this will give you cost price, so whatever is the cost price of your process account, multiply and get this answer, okay, fine, and then close this ledger, stock account ledger, see the balance, close the amount column, see the balance, and then transfer this output to the next process, that is process B, okay, और ऐसे करते जाने का till the last process. Am I clear to everyone? Acknowledge it in the chat box. Is this clear what I just said? Stock account logic. Okay, yeah, fine. And if say I am in the last stock, last process, say process C है, ये मेरा last process है, तो फिर इसका output क्या करने का, फिनिश गुड स्टॉक में डालने का. Clear everyone, right? Okay, so process type 1 was simple process account where output is given and abnormal loss and gain is the balancing figure. Then type 2 mein output is partly sold and partly transferred to the next process, and type 3 mein there is a individual stock account, process stock account for every process account, okay, and in that closing stock of closing stock of the respective process account is calculated at its respective cost price of that process. And in absence of information, if opening stock valuation is not given, then opening stock will also be calculated at cost price of the process account. Okay, am I clear with this theory part? Am I clear to everyone with the theory part? Okay, fine. Okay, so next lecture, a new sum, obviously. Yeah, correct. So I'm ending up with this meeting.